Hello everyone, welcome to Success Tree. And today we'll be again discussing the HRM MCQs. Okay, so the first question is, how can high potential employees be developed for future positions? Okay, so in HRM, how do you develop the how high potential employees for future positions? कि जिनके पास ज़्यादा potential है, आप obviously उनको higher positions पे देखना चाहेंगे. So how can you make it possible? Through a internal training, increase pay, skill, managing employee, या allowing them to further study. So the correct answer here is internal training. ओके आप उनका पे बढ़ा दीजिए, उनको मैनेज कर लीजिए, उनको फर्दर बढ़ा दीजिए. इन सब में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है इंटरनल ट्रेनिंग, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एट अ सर्टेन पोजीशन एंड यू नो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द फर्दर पोजीशन. सो फॉर दैट आप क्या करेंगे, आप उनको इंटरनल ट्रेनिंग देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट? इफ यू आर रिक्रूटिंग थ्रू अ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, तो उसमें से इसका कौन सा एडवांटेज नहीं है? इट मे बी फास्टर देन एन इन हाउसिंग रिक्रूटिंग. ऑब्वियसली ये तो एडवांटेज है, ठीक है, फास्टर होगा. उसके बाद इट डज नॉट रिक्वायर इंटरनल रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, ये भी एडवांटेज है. हमें क्या चाहिए? नॉट एन एडवांटेज. जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज है उन्हें फिर हम वी डोंट नीड इंटरनल रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट. अगला, स्क्रीनिंग not be as thorough. It may be better for attracting minority candidates. So the correct answer here is screening may not be as thorough. जैसे कि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, उनका स्क्रीनिंग उतना बेटर नहीं होगा जितना कि जब हम खुद से एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खुद से करते हैं. Next is, the primary aim of recruiting and selection process is to, when you are recruiting and selecting, what is your aim? Meet the high labor turnover, hire the best individuals at optimum cost, ensure the availability of surplus in case of sickness and absence, या फिर hire excess manpower for the future. So obviously you don't want excess people. आपका main primary aim पूछा है. Primary aim cannot be surplus for sickness and absence. So the correct answer here is hiring the best individual at an optimum cost. ठीक है. So the next question is, in the field of HRM, the field of HRM was founded on the idea that the competitive advantage of the organization relies on the following sources of capital. जो आपका HRM है वो किसके बेसिस पे जो है उसको हमने डेवलप किया था कि दैट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहाँ से आती है? ठीक है, एक कल्चरल, ह्यूमन एंड सिस्टम कैपिटल, social, cultural and human capital. Organization relies on the this option is wrong. Okay, cultural, human and source capital. Okay, so the correct answer is social, cultural and human capital. के जो HRM का आइडिया फाउंड किया गया था कि आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर कैसे, हाउ कैन यू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? सो इट इज थ्रू दी सोशल, कल्चरल एंड योर ह्यूमन कैपिटल. नेक्स्ट इज, the mental process to interpret environment as per one's own understanding is known as what? Perception, personality, attitude या ability. We have done this in class. ठीक है, आप मेंटल प्रोसेस होता है आपके माइंड में कि आप अपने एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट करते हो. जो भी आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है, दैट is in your brain, okay, and then you use that to judge or perceive your external environment, a group, a person, or कोई भी घटना होती है बाहर, तो that is known as perception. okay, mental process होता है कि जो भी आपको आप एनवायरनमेंट में देखते हो, आप उसको अपने तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, अपने तरीके से परसीव करते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज अ ग्रुप. A process of grouping of similar types of works together is known as what? जितने भी जॉब सिमिलर टाइप के हैं, जब आप उनको सिमिलर को ग्रुप करते हो, दैट इज नोन एज व्हाट? क्लासिफिकेशन, जॉब डिजाइन, जॉब इवैल्यूएशन और जॉब डिस्क्रिप्शन. सो द करेक्ट आंसर हियर इज जॉब क्लासिफिकेशन. जब सिमिलर टाइप के वर्क्स को आप जो है एक साथ ग्रुप करते हो, तो ये आपको जॉब रैंकिंग में, जॉब डिस्क्रिप्शन में, सब में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज, Mr. A must decide what position the firm should fill in the next 6 months.
व्हाट एक्टिविटीज मिस्टर ए वर्किंग ऑन. मिस्टर ए को डिसाइड करना है कि कौन सी पोजीशन जो है अगले 6 महीने में भरनी है. सो व्हाट इज ही वर्किंग ऑन? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, पर्सनल प्लानिंग या फिर इंटरव्यू. सो ही इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. 6 मंथ्स में करना है तो अभी से तो नहीं शुरू करेगा. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज पर्सनल प्लानिंग. ही इज प्लानिंग कि कहाँ पे क्या क्या कमी है रिक्रूटमेंट, हमें कहाँ कहाँ पे और पोजीशंस फिल करनी है. सो द आंसर इज सी. Once a firm has a pool of applicants, the first step is in pre-screening is the what? अब आपके पास एप्लीकेंट्स आ गए हैं तो अब प्री स्क्रीनिंग में सबसे पहले क्या करोगे? इन पर्सन इंटरव्यू, ऑन साइट विजिट, एप्लीकेशन फॉर्म, टेलीफोन इंटरव्यू. ऑब्वियसली अभी तो प्री स्क्रीनिंग चल रही है तो सबसे पहले आप उनके एप्लीकेशन फॉर्म चेक करोगे एंड यू विल सी के कौन क्वालिफाइड है कौन नहीं है. जो पेपर पे ही क्वालिफाइड नहीं है आप उन्हें निकाल दोगे अपने पूल से. So the answer is C. Next is motivating the employee is classified as informational role, interpersonal role, decisional role, conceptual role. Obviously they are talking about the मिन्सबर्ग ने जो आपके रोल ऑफ मैनेजर बोले हैं उसमें व्हेन यू आर मोटिवेटिंग योर एम्प्लॉय आप कौन सा रोल कर रहे हैं? इंटरपर्सनल रोल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मिन्सबर्ग की जो मैनेजरल क्लासिफिकेशन है रोल्स की, that you must read. Okay, so the answer is B, interpersonal roles. Okay, so these were your questions for today. Now we come to discuss these questions every other day. So please follow this कि जो आपने पढ़ा है, just to check if you are able to recall the subject matter. Okay, thank you so much.